No one in the quiet town of Merrow's End ever spoke of the lake after sunset. Merrow's एंट के खामोश कस्बे में गुरूब आफ्ताब के बाद कभी कोई झील का जिक्र नहीं करता था. The water was always still, too still, and on windless nights, some claimed they heard whispers rising from beneath its surface. पानी हमेशा साकिन रहता था, बहुत ज़्यादा साकिन, और बहवा रातों में कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने इसकी सतह के नीचे से सरगोशियाँ उठती सुनी हैं. 12-year-old Elsie had always been curious. 12 साला Elsie हमेशा से तजस्सुस रखती थी. Her grandmother used to say that ancient things were buried beneath Merrow Lake, things older than memory, older than books. इसकी दादी कहती थीं कि मेरो झील के नीचे कदीम चीज़ें दफन हैं, याददाश्त से भी पुरानी, किताबों से भी ज़्यादा पुरानी. But when Elsie asked what they were, Grandma would only give a smile, part fond, part fearful, and change the subject. लेकिन जब एल्सी पूछती कि वो क्या हैं, दादी सिर्फ एक मुस्कुराहट देते हैं, कुछ प्यार भरी, कुछ खौफजदा, और बात बदल देते हैं. One summer morning, when the mist still clung to the surface, Elsie stood at the water's edge. एक गर्मियों की सुबह जब धुंध अभी भी सतह पर थी, Elsie पानी के किनारे खड़ी थी. A soft glimmer caught her eye beneath the rippling surface. लहरों की सतह के नीचे एक मध्यम चांक इसकी नजर में आई. Without thinking, she stepped forward and slipped. सोचे बगैर वो आगे बढ़ी और फिसल गई. She expected to sink. इसने डूबने की तवक्को की. Instead, she landed gently on a stone floor, completely dry. इसके बजाय वो नरमी से एक पथरीले फर्श पर उतरी, बिल्कुल खुश्क. Around her, walls rose from the lake bed, covered in moss and ivy. इसके इर्द-गिर्द दीवारें झील के फर्श से भरी हुई थीं, काई और बेलों से ढकी हुई. She had fallen into an underwater corridor, long submerged and forgotten. वो एक ज़ीरे आब राहदारी में गिर गई थी, जो मुद्दतों से डूबी और भूली हुई थी. A strange light illuminated the walls. एक अजीब सी रोशनी ने दीवारों को रोशन कर रखा था. Along one side, a long row of parchment scrolls rested in glass cases, untouched by time. एक तरफ पार्चमेंट के तुमारों की लंबी कतार शीशे के गिलाफों में रखी थी, वक्त की दस्तरस से महफूज. They were written in a language she couldn't decipher, but something about them felt familiar. वो ऐसी ज़बान में लिखे थे जिसे वो पढ़ नहीं सकती थी, मगर उनमें कुछ ऐसा था जो मानूस महसूस होता था. Hearing footsteps, Elsie hid behind a pillar. कदमों की आहट सुनकर Elsie एक सतून के पीछे छप गई. A figure approached, a tall woman in a dark blue robe, her face hidden beneath a hood. एक सरापा करीब आया, गहरे नीले जबे में एक दराज कद औरत जिसका चेहरा नकाब के नीचे छुपा हुआ था. You are not the first, the woman said without looking up. औरत ने निगाह उठाए बगैर कहा, तुम पहली नहीं हो. But you are the first in many years. लेकिन तुम कई बरसों में पहली हो. Elsie stepped out, hesitant but curious. Elsie हचकचाते हुए मगर तजस्सुस के साथ सामने आई. What is this place? ये जगह क्या है? The library beneath the lake, the woman replied. औरत ने जवाब दिया, झील के नीचे लाइब्रेरी. It holds knowledge the world has tried to forget. ये वो इल्म संभाले हुए है जिसे दुनिया भूल जाना चाहती थी. And it chooses who may enter. और ये खुद फैसला करती है कि कौन दाखिल हो सकता है. The woman introduced herself as the guardian. औरत ने अपना तारुफ गार्डियन के तौर पर कराया. She explained that long ago, this place had been concealed to protect dangerous truths. इसने बताया कि बहुत पहले इस जगह को खतरनाक सच्चाइयों की हिफाजत के लिए छुपाया गया था. Each visitor had to unveil one secret about themselves or the world before they could leave. हर आने वाले को वापस जाने से पहले एक राज अपने मुताल्लिक या दुनिया के मुताल्लिक जाहिर करना होता था. Elsie felt a shiver run down her spine. Elsie की रीढ़ की हड्डी में झरझरी दौड़ गई. What if I don't have a secret? अगर मेरे पास कोई राज ना हो? Everyone does, the guardian said, walking deeper into the corridor. गार्डियन ने राहदारी में आगे बढ़ते हुए कहा, हर किसी के पास होता है. At the end of the hall, a door stood with an inscription carved into its surface.
हाल के आखिर में एक दरवाज़ा था जिस पर एक कंधा इबारत थी. Elsie traced the letters with her fingers, and the door opened slowly, revealing a vast chamber filled with floating books, glowing runes, and staircases that moved on their own. Elsie ने इंगलियों से हरूफ को छुआ और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया. सामने एक वसीअ कमरा था जिसमें मालक किताबें, चमकते हरूफ और खुद हरकत करती सीढ़ियाँ थीं. One book hovered before her. एक किताब इसके सामने मालक हुई. It opened on its own, showing a memory. The day Elsie's mother disappeared during a storm at the lake. वो खुद ब खुद खुल गई और एक याद दिखाई. वो दिन जब एल्सी की माँ झील पर तूफान के दौरान गायब हुई थी. Everyone had said she drowned. सब ने कहा था कि वो डूब गई थी. But in the book, Elsie saw her mother entering the same corridor she had just passed through. लेकिन किताब में एल्सी ने अपनी माँ को इसी राहदारी में दाखिल होते देखा जिससे वो अभी गुजरी थी. She's alive? Elsie gasped. एल्सी ने हैरत से कहा, वो जिंदा है? The guardian nodded. गार्डियन ने सर हिलाया. Perhaps, शायद. But knowledge comes with a cost. लेकिन इल्म की कीमत होती है. Do you wish to stay and learn more? Or return, knowing the truth changes everything? क्या तुम रख कर मजीद सीखना चाहती हो या वापस जाना चाहती हो, ये जानते हुए कि सच सब कुछ बदल देगा? Elsie looked back at the open chamber, then at the lake above, shimmering faintly through the ceiling. Elsie ने खुले कमरे की तरफ देखा, फिर छत के पार हल्की सी चमकती हुई झील की तरफ. She took a deep breath. उसने गहरा सांस लिया. I'll stay. मैं रखूंगी. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. The library beneath the lake. No one in the quiet town of Merrow's End ever spoke of the lake after sunset. The water was always still, too still, and on windless nights, some claimed they heard whispers rising from beneath its surface. 12-year-old Elsie had always been curious. Her grandmother used to say that ancient things were buried beneath Merrow Lake, things older than memory, older than books. But when Elsie asked what they were, Grandma would only give a smile, part fond, part fearful, and change the subject. One summer morning, when the mist still clung to the surface, Elsie stood at the water's edge. A soft glimmer caught her eye beneath the rippling surface. Without thinking, she stepped forward and slipped. She expected to sink. Instead, she landed gently on a stone floor, completely dry. Around her, walls rose from the lake bed, covered in moss and ivy. She had fallen into an underwater corridor, long submerged and forgotten. A strange light illuminated the walls. Along one side, a long row of parchment scrolls rested in glass cases untouched by time. They were written in a language she couldn't decipher, but something about them felt familiar. Hearing footsteps, Elsie hid behind a pillar. A figure approached, a tall woman in a dark blue robe, her face hidden beneath a hood. "You are not the first," the woman said without looking up, "but you are the first in many years." Elsie stepped out, hesitant but curious. "What is this place?" "The library beneath the lake," the woman replied. "It holds knowledge the world has tried to forget, and it chooses who may enter." The woman introduced herself as the Guardian. She explained that long ago, this place had been concealed to protect dangerous truths. Each visitor had to unveil one secret about themselves or the world before they could leave. Elsie felt a shiver run down her spine. "What if I don't have a secret?" "Everyone does," the Guardian said, walking deeper into the corridor. At the end of the hall, a door stood with an inscription carved into its surface. Elsie traced the letters with her fingers, and the door opened slowly, revealing a vast chamber filled with floating books, glowing runes, and staircases that moved on their own. One book hovered before her. It opened on its own, showing a memory. The day Elsie's mother disappeared during a storm at the lake. Everyone had said she drowned. But in the book, Elsie saw her mother entering the same corridor she had just passed through. "She's alive?" Elsie gasped. The Guardian nodded. "Perhaps, but knowledge comes with a cost. Do you wish to stay and learn more, or return, knowing the truth changes everything?" Elsie looked back at the open chamber, then at the lake above, shimmering faintly through the ceiling.
She took a deep breath. I'll stay. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब तक हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।